Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next lecture is Gauss's law. We have discussed the electric flux through any closed surface in last lecture. We will use the result which we have deduced in previous lecture, that is the flux through any closed surface phi E is equals Q divided by epsilon in order to deduce the result for the Gauss's law. Here we have any closed shape which is enclosing some charge in it. All of these dots which I have drawn here are representing the some magnitude of charge which is placed at that points. We have named the charges with Q1, Q2, Q3 and up to so on into Qn. Now we will apply this relation to calculate the electric flux through due to each of single charge, and then we will write a combined general relation by summing up the flux due to each charge which is placed in that shape. So the total flux phi E will be equals to, due to Q1 it will be Q1 over epsilon plus the electric flux due to charge Q2 will become simply Q2 divided by epsilon plus electric flux due to charge Q3 will become simply, since the magnitude of charge is Q3 and the permittivity of free space is epsilon, so plus up to so on. In spite of writing all of the flux due to all charges, we just have moved to the last charge, that is Qn. So the flux due to last charge will become Qn over epsilon, and correspondingly we have taken the summation over whole of the charges. Here 1 over epsilon is common in all of these terms, take it out and the remaining terms will become Q1 plus Q2 plus Q3 plus up to so on plus Qn. Thus the total flux through this closed surface will become equals to 1 over epsilon times total charge enclosed. Thus if we replace it as capital Q which represents the total charge divided by epsilon, then from this statement we can define, or we can state the Gauss's law, because every law is stated, not is defined. यहाँ से अगर हम Gauss's law को state करें तो statement इसकी क्या बनेगी? Flux, total flux is equal one over epsilon times total charge enclosed. This is a simple statement, simplest statement of Gauss's law. In order to apply it at any shape which is enclosing some charge, so this simple statement will be that it is total flux is equals to 1 over epsilon times the total charge enclosed by that surface. We can again check that the total flux is depends on only on two terms. One is the total amount of charge or magnitude of charge, and other is the medium between them. It is independent, even it is also independent of the geometry of the shape, that any shape, that what type of the shape which is enclosing that charge, either it is a spherical shape, either it is any other shape it could be. Now we will move to the application of Gauss's law. The first application of Gauss's law which is discussed in our text is the intensity inside a hollow charged sphere. Keep in mind कि Gauss's law को अप्लाई करना है, हमने अप्लाई करके हमने डिफरेंट शेप्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है. तो किसी भी शेप के ऊपर या किसी भी ज्योमेट्री के ऊपर जब हमने Gauss's लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके 2-3 जनरल स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है. उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जो भी शेप आपको गिवन है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आपने उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस सपोज करनी है ऑफ एनी शेप.
आपने जो गिवन शेप होगी जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसकी रिजेम्बलेंस में देख के आपने उसकी करस्पॉन्डिंगली एक कोई इस तरह की गाशियन सरफेस सपोज कर लेनी है जिसको यूज़ करके आप इजीली उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लें। देन आपने उस गाशियन सरफेस के ऊपर और उस शेप के ऊपर आपने गासेस लॉ अप्लाई करना है। गासेस लॉ अप्लाई कर लेने के बाद फिर आप गासेस लॉ के इस रिलेशन को जो सिंपल हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन आया था दैट इज़ फाई ई इज इक्वल्स ई डॉट ए, जो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। इस रिलेशन को आपने गासेस लॉ के रिलेशन के साथ कंपेयर करना है और करस्पॉन्डिंगली वहाँ से आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेनी है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो एक स्फीयर गिवन है, ये आउटर स्फीयर है जिसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया एंड इट्स रेडियस इज नेम्ड एज सपोज आर। अब इस स्फीयर के करस्पॉन्डिंग हमने एक गाशियन सरफेस सपोज करनी है। अब गाशियन सरफेस हम जो सपोज करेंगे वो जाहिर सी बात है कि हमारे को जो पेरेंट शेप है वो एक स्फेरिकल शेप की है, तो हम जो गाशियन सरफेस सपोज करेंगे वो भी हम एक स्फीयर की शेप में ही सपोज करेंगे। बट द डिफरेंस बिटवीन दिस स्फीयर एंड दैट स्फीयर विल बी ओनली द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। यहाँ पे हमने जो गिवन स्फीयर है उसका रेडियस हमने कैपिटल आर सपोज कर लिया। इसके अंदर हम ये छोटा स्फीयर एक सपोज कर लेते हैं हुज रेडियस इज नेम्ड एज R prime with the condition that, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है that R prime is less than R. We have now we have two spheres. One has the radius of R prime and other has the radius of R, and also keep in mind that both of these spheres are concentric. The center of both of these spheres is common at one single point. Now we have to calculate the electric intensity by applying the Gauss's electric flux by applying the Gauss's law on this small radius sphere which is we have supposed in the shape of a Gaussian surface. So according to the Gauss's law, phi E is equals Q divided by epsilon. Now we have to check how much amount of charge is present on this Gaussian surface. Since the total charge is distributed on the outer surface of this high radius sphere, so there is not a single charge is present on this Gaussian surface. That is why we will put the Q is equals to 0 over here, and hence as a result we will get the total flux to the Gaussian surface comes out to be 0, may be named as equation number 1. Now we will write the total flux through this surface which we have discussed in electric flux topic, that is phi E is equals E vector dot A vector, may be named as equation number 2. Now we have two different relations for electric flux from a single shape. That is why, since this is electric flux, this is also electric flux, so we can compare both of these equations, and as a result we will get E vector dot A vector is equals 0 from equation number 1 and 2. 1 and 2. From here, the product of two terms gives us the 0 answer. It means either one of the two terms will be equals to 0. We have two terms, one is intensity and other is the area. Since there is a physical sphere we have, that is why area of the sphere could not be equals to 0. क्योंकि हमारे पास रियल के अंदर रियली जब हम इसको डिस्कस करें तो एक स्फीयर हमारे पास मौजूद है, तो जब भी कोई शेप या कोई चीज़ हमारे पास मौजूद है तो करस्पॉन्डिंगली उसका एरिया ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स कि जो एरिया स्फीयर का वो एरिया उसका एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसका एरिया एग्जिस्ट नहीं करता, एरिया उसका एग्जिस्ट करता है, अगर एरिया एग्जिस्ट करता है इट मीन्स टू टर्म्स की प्रोडक्ट 0 होने के लिए हमें जो दूसरी टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू 0. इट मीन्स कि हमारे पास जो एक स्फीयर है अगर हम उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से उस स्फीयर के इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी।
यानी कि अगर हम इस तरह की कोई हमारे पास क्लोज शेप है जिस शेप के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अगर हम कोई चीज़ उठा के उस शेप के इनसाइड प्लेस कर देंगे तो उस चार्ज की वजह से जो इनर शेप के सरफेस के अंदर कोई चीज़ पड़ी होगी उसके ऊपर उस चार्ज की वजह से, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसकी क्लियरली और कॉमन सी एग्जाम्पल, अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल दी जाए तो अगर कभी आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी के अंदर या कार में बैठ के जा रहे हो, अचानक से अगर लाइटिंग स्टार्ट हो जाए, बारिश आने से तूफान आ जाता है, लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये आप लोगों के लिए एक एडवाइस के तौर पे है कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहें। अगर आप बाहर निकलेंगे या बाहर निकल के आप किसी दरख्त के नीचे या किसी जगह पे खड़े होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा खतरा होगा कि वो लाइटिंग आके आपको कैप्चर कर ले। अगर आप गाड़ी के अंदर रहेंगे तो गाड़ी के ऊपर अगर लाइट आके पड़ती भी है तो जो चार्ज होगा सारा का सारा वो गाड़ी की सरफेस के ऊपर रहेगा, बट इट विल नॉट हर्ट एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द कार।